हेलो हाय नमस्कार। तो बेसिकली बहुत दिन पर आम लाइव करे एंड लाइव रो चैप्टर होची हमर बेसिकली एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन तार एमसीक्यू डिस्कशन करे जल्दी जल्दी समस्त जॉइन हो एंड टाइम वेस्ट नो वेस्ट न करी इमीडिएटली हम स्टार्ट कर दवा। समस्त ऑडियो वीडियो क्लियरली विजिबल अछि तो टिके खाली कंफर्म करो देन हम इमीडिएटली स्टार्ट करिया। कंफर्म करो ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर क्लियर टू यू और नॉट। Yes, Ankita. Yes, good evening, Ankita. Yes, yes. तो चलो इमीडिएटली वेस्ट करिए स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इन्वॉल्व्स मींस बेसिकली एक्सक्रीशन प्रोसेस टा का इन्वॉल्व करची दैट इज द रिमूवल ऑफ यूजफुल सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, रिमूवल ऑफ सब्सटेंस which have never been used by the body, removal by product formed during the useful activity in the body। कौन हम बेसिकली को प्रोसीजर को हम एक्सक्रीशन कहवा and the meaning of excretion and ejection, these are the two different meanings। ejection means that is the removal of the solid waste or the unabsorbed waste or the unuseful waste which is formed by the digestive system, but excretion means that is the removal of metabolic waste। and answer will be yes, Lakshmi, Simran, Jyotsnarani, Varsha, Gyanaprabha, Suraj, Simran, and maximum students are saying that is the option number B is correct, and yes, the right answer is option number B। प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। स्ट्रिक्टली मन रखिबो एमती भी क्वेश्चन पचाई थाई पारे दैट इज द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजेनिक वेस्ट इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन आल्सो। हमरो दैट इज जहां भी नाइट्रोजेनस कंपाउंड इनटेक करछे जस्ट लाइक द प्रोटीन, प्रोटीन जतला ब्रेक डाउन होची अमीनो एसिड प्रोवाइड करछे एंड इन द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड देयर इज द नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट। सो प्रोटीनेजियस कंपाउंड खाइले अमीनो एसिड होची, अमीनो एसिड नाइट्रोजन कंपाउंड होची एंड आल्सो दैट इज जेतबेले हमर डीएनए एंड आरएनए रो ब्रेकडाउन होची सेथरे भी बेसिकली हमर कोन अछि दैट इज एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन, यूरासिल, थायामिन एंड तार कंपाउंड जो देखिया सेथरे भी नाइट्रोजन अछि। सो द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। यस यस, तिलोतमा, सूरज, वर्षा, लक्ष्मी पूरा कंसिस्टेंसी रे देखो, वन बाय वन क्वेश्चन को बुझो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, निजे ट्राई करो क्वेश्चन को सॉल्व करबे पे देखियो 100% यू विल गेट ए बेटर नॉलेज। एंड जदि आम गोटे क्लास रे बसुचे निहात रूप आम पाखे से गोल नहीं कि बसिया दरकार कि आम जी समय आम क्लास रे बसुचे आम जमी टाइम वेस्ट न हो कि आमको सामना वाला जो जहाँ भी जहाँ कहते कि जहाँ भी पढ़ा होती आम यूजफुल हो, सो दैट कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, सब जगह क्वेश्चन ईच एंड एवरी क्वेश्चन को भलसे पढ़ एंड आंसर दियो, देखियो बेटर नॉलेज मिलिबो। चलो तो ऑप्शन नंबर बी हम फर्स्ट क्वेश्चन रो। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 2 एंड द क्वेश्चन इज okay, the question is animals accumulate wastes like urea, uric acid, carbon dioxide, water, ions like Na plus, K plus, Cl minus, phosphate, sulfates etc by animal माने बेसिकली जो accumulate करछथि waste जेमति कि यूरिया गोटे waste, uric acid इज waste, carbon dioxide waste, Na plus, K plus, Cl minus आको हम waste कहयानी एक्सेस हे गेले waste। तो एई गुडा को केमति होउची भाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी ना एक्सेस इंजेक्शन ना एक्सक्रीशन ना बोथ ए एंड बी को प्रोसेस रे बेसिकली हम बॉडी रे अक्युमुलेट होउची, ऑब्वियसली हम इंजेस्ट करछु बोली एंड आल्सो मेटाबॉलिक एक्टिविटी रे क्लियर। सो दैट इज नो 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 बो यस, आंसर विल बी बोथ ए एंड बी राइट। देखो मन रखिबो Na प्लस, K प्लस, Cl माइनस, Mg प्लस 2, HCO3 minus, these ions obviously these are the ions because cation and anion are there and both cation and anion is called as ions। so ions are कोड प्रेजेंट थांती हमरो दैट इज प्लाज्मा रे थांती एंड प्लाज्मा इज ए कंपोनेंट ऑफ ब्लड। स्ट्रिक्टली मन रखिबो एगुडा को एक्सेस हेले खराब एंड बहुत जदी डाउन भी हिजो खराब। सो हमरो जो एक्सक्रीशन प्रोसेस रे किडनी रो रोल कोन जदी किछ ओके ओके संतोष सुनो जदी Na+, K+, Cl- Mg+ बहुत एक्सेस हे जाउ हम बॉडी रे
कि प्लाज्मा रे जदी एक्सेस हो जाउची कि एक्सेस तमे इंजेस्ट करूचो, the main function of kidney is to filtrate out those excess product of Na plus K plus Cl minus Mg plus to HCO3 minus. किडनी रो काम होची एक्सेस जिंस को फिल्ट्रेट करके यूरिन देकी रिलीज आउट करिवो. एंड यू हैव टू रिमेंबर जदी तमरो Na plus K plus Cl minus जो आयरन रो डेफिशिएंसी हबो, देन तमरो मसल क्रैम्प हेई पारे, मसल स्ट्रिप हेई पारे, तुमको सीवियर प्रॉब्लम भी हेई पारे. सेति पई तो कुआ जाय जेतोले मसल स्ट्रिप हेई जाय कि संग संग तमरो हाथ गोड़ एंती पूरा नाठी हेई गला बेले हेई जाय, दैट इज do you know the meaning of nati in Odia? Means that हाथ गोड़ muscle strip हे जिवो. So संग संग तुम कोन कुआ जाय जदी if you have the ORS, that is the oral rehydration solution, जदी ORS अछि, ORS रे Na plus Cl minus सब जाको आयरन थाए, तो इमीडिएटली ORS ता देले तमर बॉडी रे जो आयरन रो डेफिशिएंसी अछि बा आयरन रो कमी हे जे सेटा फुलफिल हे जिवो एंड तुमको दैट इज रिलीफ फील हबो. अदरवाइज तुमको इमीडिएटली कुआ जाय कि लोअर कैल्शियम लेवल इज आल्सो कॉल्ड एज टिटानियम. नॉल नहीं, दैट इज घरे कुआ जाए कि तुमको पानी प्लस तुमको सॉल्ट पानी रे लुण मिसे कि चीनी मिसे कि इमीडिएटली पिया पे, जोटा कि गोटे बेसिकली आयरन रो डेफिशिएंसी को फुलफिल करबे. एंड मन रखिबे एटा बहुत इंपोर्टेंट भी तुम डेली लाइफ रे. देखो आमे जो भी जिंस पढुचे तुम जो ताको ताको डेली लाइफ से रिलेट करि परिबो, देन यू विल गेट ए बेटर नॉलेज. जदी डेली लाइफ से को हमको ताको रिलेट करि पाने, सो एटा होची सब डिफरेंट माने सबठारो बैड कथा. चलो कोन हबो यही सब जिन एक्सेस हो गले किडनी थ्रू रे, किडनी ताको फिल्ट्रेट आउट करके यूरिन थ्रू रे रिलीज आउट करियो. बट डेफिशिएंसी असुविधा हमको ओआरएस वगैरह पिया पड़े. ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ओरल माने पार्टी रे, एंड रिहाइड्रेशन मींस दैट इज अगेन बॉडी को दरकार, दो सॉल्यूशन मींस दैट इज बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट रो ऐड. देन ऑर्डर ऑफ टॉक्सिसिटी अमंग द अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड. So basically among the ammonia and urea and uric acid, which one is the highly toxic in nature? Ammonia or urea or uric acid? Yes, that the right answers from Ankita, Varsha, Santosh. Yes, that is ammonia is highly toxic, and then urea, then uric acid. And here I wanna highlight one thing कि कहि परिबो among ammonia, urea and uric acid, which one is easily soluble in water? Among the ammonia and urea and uric acid, which one is easily soluble in water or the readily soluble in water? Who can say? Ammonia, urea and uric acid, which one is easily or the readily soluble in water? कौन होबो? Yes, ammonia. Ammonia easily soluble in water. Okay, next question. For the removal of ammonia, do I require lots of water or the minimal amount of water? Means ammonia रो release out करिया पई हमको excess water दरकार और the least water भी remove हो जो ammonia. Lots of water, yes, right. And you guys are really intelligent. Varsha, Mahesh, Santosh, yes. Ammonia is highly soluble in water, you have to remember. And second thing, ammonia is highly toxic. Ammonia production हबो माने that is हम बॉडी रे एते टाइम रही परिबोनी, so that ammonia को easily बा संगे संगे remove release out करे दरकार. And to release the ammonia we need maximum amounts of water. So जो organism माने basically heavy water concentration रहती बा heavy water aquatic animals माने basically ammonia को release करती. And these animals are called as ammonotelic organism. So ammonia को release करिया पे lots of water दरकार. Clear? Then here another question is among ammonia, urea and uric acid, to remove which nitrogenous product basically को कहार removal टा pellet and paste आकार हुए. And this is the most important lining also. Pellet and paste आकार रे कोटा release out हुए. Ammonia, urea and uric acid किए pellet and, yes, right answer is from Santosh, and the answer is uric acid. यूरिक एसिड जो माने यूरिक एसिड को रिलीज करंती से माने होचंती यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म. एंड बेसिकली से मानकर जो यूरिन टा पेलेट एंड पेस्ट, राइट, चढ़ई मानकर. ओके चलो, तो आंसर ऑफ कोन? अमोनिया, यूरिया. अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक, देन यूरिया, एंड द लीस्ट टॉक्सिक इज यूरिक एसिड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. Among the ammonia, urea and uric acid, which one needs the least amount of water? And yes, same question I have already said you. कौन हबो? Yes, perfect, Subhranshu, right.
ammonia, urea and uric acid भितर कोटा होचे least amount of water दरकार extract out करया पे. Yes, right answer is uric acid. Ammonia को release करया पे, that is lots amount of water is required, but to remove the uric acid we need little amount of water. Next, come to the question number 5. Among ammonia, urea and urea, which one is most soluble? Means which one is mostly soluble in water? चलो कोटा most soluble कोटा है ammonia, uric acid ना urea कौन हो ammonia right? Yes, प्रज्ञा तिलोतमा सुजाता एत्ती की पिला तुम बैच रे means both offline and online and batch 1 batch 2 only 23 students and तमे जो 23 अछो तो you all are the sincere students एटा मन रखो. चलो कौन अब आंसर मोस्ट सॉल्युबल होचे अमोनिया. क्वेश्चन नंबर 6. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर द अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म किया भीतर पचार छै. और अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म काहा कया दोज ऑर्गेनिज्म जहार चीफ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट एमती नाही कि जो माने अमोनिया को रिलीज करंती से माने यूरिया एंड यूरिक एसिड रिलीज कर परिबेनी बोली. चीफ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट जहार अमोनिया दीज ऑर्गेनिज्म्स आर कॉल्ड एज अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म. And as you know that the maximum amount of water is required to eliminate ammonia and the ammonia is highly soluble in water, so that aquatic animals like bonifices, aquatic amphibian, aquatic insect, ammoniotelic, ureotelic. Who can say? Give me some of the examples of ureotelic organism. Okay, Santosh, Sujit, Simran, answer दियो. Give me some of the examples of ureotelic organism. Ureotelic organism को वर्षा महेश समस्त गोटे गोटे को mammals. Yes, then right, mammals, terrestrial amphibian, aquatic amphibian is ammoniotelic, but the terrestrial amphibian is yes, that is ureotelic. Mammals, terrestrial amphibian and the marine fish. Okay, here I wanna ask you a question. Okay, so camel is a ureotelic organism or ammoniotelic or uricotelic? Camel. Okay, and this question for the progya. Just go कि ଆମର basically camel is an ammoniotelic or ureotelic or uricotelic? Yes, camel is a mammals and it is ureotelic. And another question for Ankita, that is dog is ureotelic or ammoniotelic or uricotelic? Dog. That in our daily life we are facing so many problems for the dogs. So dogs to ammoniotelic or ureotelic? Yes, the right answer is ureotelics. Okay, and मन रखिबो frog रो tadpole टा होची ammonia release करिवो, but mature frog होची urea release करिवो. Frog is ureotelic but the tadpole is ammoniotelic. Okay, चलो next question. Bonifices, aquatic amphibian, both A and B होबो हला. Bonifices and aquatic amphibian, these are the ammoniotelic, both A and B. Mammals होची ureotelic, जोतरे कि camel जीवो, dog, बिलेई, कुकुर, छेड़ी, मेंढा सब. चलो then अच्छा तुमको जदि क्वेश्चन पचारे जीवो क्रो कोन and cow कोन? Cow is ammoniotelic or ureotelic and crow is ammoniotelic or ureotelic? Who can say? Yes, because it's a mammal, Santosh, right? And here my question is, crow is ureotelic or ureotelic? And cow is ureotelic or ureotelic? Ureotelic is cow. Yes, cow it is and it is ureotelic, and crow it is a word, so that it is uricotelic, right? Uricotelic, perfect. बढ़िया अच्छे, पूरा आराम से पढ़ो, बिंदास रे पढ़ो, एमसीक्यू भरा प्रैक्टिस करो. ट्रस्ट में तुम एग्जाम आसला बेलू तुमको पूरा किसी भी कॉन्सेप्ट माने डाउट नथिबो. चलो नेक्स्ट जीवा. aquatic animal excrete ammonia, which of the following statement does not support this fact? aquatic animal माने बेसिकली अमोनिया को रिलीज करंती बा एक्सक्रीट करंती. सो को आको भितर को स्टेटमेंट व्हिच इज नॉट करेक्ट फॉर द स्टेटमेंट दैट इज एई पई कोटा करेक्ट नाही. अमोनिया इज इजीली सॉल्युबल. यस, obviously ammonia is easily soluble in water, and to release the ammonia high amount of water is required, so that aquatic animal release the excretory product ammonia. Okay,
ammonia released from the body through the kidney नाइ kidney टा well developed नुह that is aquatic amphibian होतु छोट छोट सब organisms होतु जो माने पानी भीतर होचंदी जो माने का ammonia को release out करचंदी से माने केस रे कोन ammonia टा एते बेसिकली एते से माने kidney टा well developed की ammonia gets ammonia main converted हेई परिबो देखो एठी ऑप्शन जदि हमें टिकिए डीपली भाबिया जेहेतु aquatic animal माने ammonia को release करंती तो से माने ammonia को कोन लेस टॉक्सिक यूरिया एंड यूरिक एसिड कन्वर्ट करंती सेमति भाबिला बेलु करंतीनी भी काहे कि ना जदि आम मान केस रे देखिया आमे माने हाईली टॉक्सिक ammonia को लेस टॉक्सिक यूरिया को कन्वर्ट करे एंड इट इज कॉल्ड एज यूरिया साइकिल जोटा कि लिवर रे हुए बट एमान केस रे हुए नहीं बट टिके जदि डीपली देखिया बोथ बी एंड डी भी हे परियो काहे कि ना जति सब प्रिमिटिव एनिमल रहले फ्लैट वर्म रहले स्पंज रहले एमान सब एक्वाटिक एनिमल एंड एमाने रिलीज करंते ammonia को जेमति कि स्पंज हो जोटा कि पोरीफेरा फाइलम कहूचे सिलेंड्रेटा कहू टेनोफेरा कहू एगुड़ा को बेसिकली ammonia को रिलीज आउट करते हैं से किडनी टा वेल डेवलप न सो बोथ बी एंड डी हे परियो बट जदि याको टिके डीपली भाबिवा ammonia टा कोन एमाने कोन ammonia को यूरिया यूरिक एसिड कन्वर्ट करंती कि ताल जदि ammonia को से माने यूरिया एंड यूरिक एसिड कन्वर्ट करते ताल से माने यूरियोटेलिक यूरिकोटेलिक हबा कथा तो बुझिला बेलको हबो बट बोथ बी एंड डी 50-50 गुडा रहइबो लेट इट देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 8 व्हाई टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट lesser toxic nitrogenous waste कौन पाई that is the terrestrial organisms excrete less amount of less toxic nitrogenous waste कौन पाई terrestrial organism माने that is ammonia को release न करी कि urea and uric acid को release करंती obviously the term here the term is used terrestrial and in the terrestrial condition that is sufficient amount of water is not present सो जदि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट थांता ताहले अमोनिया टा रिलीज करियाटा टिके भलो होइतांता ऑब्वियसली द टर्म इज यूज्ड फॉर टेरेस्ट्रियल सो फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर एंड द राइट आंसर इज यस 8 ए 8 नंबर ए परफेक्ट बाकी तुम आमे जहा क्वेश्चन डिस्कशन तुम बुझी परछो तो तिलोतमा अंकिता लक्ष्मी दैट इज जस्ट लेट मी कंफर्म कि तमे टिके खाली 2 मिनिट को कि तमे बुझा पड़छि जहां में डिस्कशन करछे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इन यूरिकोटेलिक एनिमल्स ammonia produced by metabolism is converted into urea ureotelic animals means those animals whose chief excretory product is urea and we are the ureotelic organism and the question is ammonia produced by metabolism is converted to urea बस आमर बेसिकली जो माने यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म रहिले आम मन एग्जांपल नियो तो आम माने अमोनिया को यूरिया रे कोड कन्वर्ट करे यस द राइट आंसर इज लिवर परफेक्ट अनदर क्वेश्चन फॉर एग्जांपल सुब्रांशु इज टेकिंग लॉट्स ऑफ ग्लूकोज and the excess glucose is get converted to the glycogen and my question is आमे जदि excess glucose intake करछे प्रबल मिठा खाउछे प्रबल सीरा पिउछे so से glucose टा glycogen रे कोड कन्वर्ट होबो and my options are kidney liver spleen lungs options are same but the question is different that is the glucose टा glycogen रे कन्वर्ट हुए बा excess glucose glycogen रे कन्वर्ट हुए कोठी कन्वर्ट हेकी कोड स्टोर हुए yes the right answer is liver मन रखिबो लिवर इज द मोस्ट कॉस्टली ऑर्गन लिवर डिस्फंक्शन हेले बहुत सारा प्रॉब्लम हो एंड द हेपाटोसाइट सेल इज प्रेजेंट इन लिवर व्हिच इज इंपोर्टेंट टू कन्वर्ट द ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन and also it is important to break down the protein and also it is important to break down the fat also. Come to the next question number 11. The nitrogenous waste is excreted in the form of nitrogenous pellet बा कहार नाइट्रोजेनस वेस्ट पेलेट एंड पेस्ट आकार रिलीज है एंड ऑलरेडी ये क्वेश्चन को हम फर्स्ट नंबर रे डिस्कशन कले को कोन हबो द नाइट्रोजेनस वेस्ट इज एक्सट्रैक्टेड इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजेनस पेलेट मींस whose excretory product is released by the form of a pellet or a paste yes the answer is that is the uricotelic organism as you know that uricotelic organism means those organism whose excretory product are uric acid and uric acid for the removal of uric acid or for the release of uric acid that is the minimal amount of water is required so answer will be reptiles birds land snails and here that is reptiles will be answer right yes perfect mon rakhibo for example if I will ask you pigeon or the para it is an ureotelic or uricotelic or ammonotelic who can say
Ammonotelic or ureotelic or uricotelic? Pigeon means that is para. Parata ammonotelic रे जीवो or ureotelic or uricotelic? Yes, the right answer is uricotelic. Perfect. चलो. Okay. And the question number 10 is in marine fishes. Marine fishes. The term here it is used marine fishes. So you have to remember marine fishes, terrestrial amphibian, nitrogenous waste filtered and excreted through the. कौन हबो? को marine fishes, terrestrial amphibian एमान केस रे कौन हबो? Mammals, terrestrial amphibian, marine fish. Obviously, the answer will be C. Kidney. Yes, kidney is the chief excretory organ of the ureotelic organism, right? In our case, the chief excretory organ is kidney, but there are sub excretory organs that are located. Just like lungs also act as a excretory organ. So, who can say why I am saying that lungs is a excretory organ? Who can say? Okay. Obviously, that is we are releasing the carbon dioxide. Yes, and there are also sub excretory organ are located just like the sweat gland and the sebaceous glands. Yes, and also the liver. Chalo, right, Varsa. Next, question number 12. Which of the following is uricotelic? Means co-organism uric acid को release करे, and this question is from the JIPMER 2019. Co-organism uricotelic, insect, birds, lizards, all of these. Strictly मन रखिबो urico acid release करुथिबो organism बा uricotelic organism किए reptiles, birds and land snails and insect, and here that is all of this. Perfect. Chalo. Next question number 14. Which of the following structure help in the removal of nitrogenous waste as well as concerned with osmoregulation? Means that is the two terms used here, that is the osmoregulation and the excretion. So who can say first what is the meaning of osmoregulation and what is osmoregulation and what is osmolarity? Okay. Balance of a mineral in the body. Osmolarity means the amount of a solute in a solution. Means if I will use the term hyperosmolarity, means the amount of a solute is high. If I will use the term hyposmolarity, means the amount of solute is low, right? And ionic balance. Osmoregulation means that is the balance of water and the ion, right? Water and ion ro balance को कहा जाए osmoregulation, but osmolarity होची amount of a solute in a solution. Perfect. Okay. चलो कौन हम ताले किए प्रोटोनेफ्रिडिया देखो समस्तिंकर जो भी ऑर्गेनिज्म से मानकर समस्तिंकर एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑस्मो रेगुलेशन रे काम करिवे. सो ऑल ऑफ दिस राइट. जो 14 नंबर डी. चलो एंड महेश, नितेश, सुजीत, अंकित, अंकिता, संतोष, वर्षा. ओके चलो come to question number 15. The excretory organ in crustaceans like prawn व चिंगुड़ी मानकर excretory organ किए? And options are antennal gland. Antennal gland is otherwise called as green gland. So you have to remember green gland and the antennal gland. It will be the right answer. Then option को derive करिया. And this question for Tamanna Misra. So Tamanna, can you say flame cell is the excretory organ of which animal? Basically को organism माने तांकर excretory organ flame cell रूपे यूज करती. And second question for the Lakshmi, nephridia को माने यूज करती excretory organ रूपे. And the question is for the Sujit, that is the Malpighian tubule को. Yes, and antennal gland, green gland. Antennal gland, green gland. But more question थिला कि तमन्ना को पाई flame cell I think, and Lakshmi nephridia and Sujit Malpighian tubule. Flame cell का excretory organ? And answer from Lakshmi, that is flame, that is nephridia is the excretory organ of annelids. Annelids को हमें को worm बोली कोई ring worm. It is called as
ringworm. Okay. Then flame cell karo platyhelminthes. You have to remember maybe exam re flame cell or protonephridia लिखा थी वो. Protonephridia or flame cell is the excretory organ for platyhelminthes. Okay. And Malpighian tubule karo Malpighian tubule is the excretory organ for the arthropoda, right? Okay. Yes, Nephridia for Annelida. And the right answer from Tamanna, that is the flat arms, and Lakshmi, Santosh is perfect. Suraj, Ankita, ready. अच्छा अच्छा एटी गोटे टर्म हम यूज करिया Malpighian tubule. This is Malpighian tubule. What is Malpighian body and what is renal tubule and what is renal capsule and what is Malpighian capsule? These terms are a little bit confused. That is Malpighian tubule कौन Malpighian body कौन. Suppose this is the Malpighian tubule, Malpighian body, renal tubule, renal capsule. As we are reading the chapter excretion, we must have an idea about the tubule body and renal tubule, renal capsule and the Malpighian capsule. Okay. चलो याको डिराइव करिया. So what is the meaning of these terms? Okay. कौन हला? चलो सूरज सेम कहार सेम. Okay. Malpighian tubule. Malpighian tubule कहार? Malpighian tubule is a excretory organ for arthropoda, right? Arthropoda ro excretory organ. Next, Malpighian body. Malpighian body, as you know that the cup-like structure, Bowman's capsule, along with glomerulus, cup-like structure, Bowman's capsule, along with glomerulus, or the complete structure, or the glomerulus along with the Bowman's capsule is called as Malpighian body, right? Then come to the third term, renal tubule. As you know that nephron को दीटा part रे divide करायची. One part is that is the Malpighian body or Malpighian capsule or renal capsule. The meaning of Malpighian capsule, that is the glomerulus along with Bowman's capsule. The meaning of Malpighian capsule जहाँ Malpighian body से renal capsule से and nephron रा out part होचे renal tubule. Renal tubule माने PCT, DCT and loop of Henle. Clear? So renal tubule, that is PCT DCT loop of Henle. Malpighian tubule होची glomerulus plus Bowman's capsule. Renal capsule भी same glomerulus plus Bowman's capsule. Malpighian capsule समान glomerulus plus Bowman's capsule. Renal capsule no, renal capsule. Okay, the renal capsule means the outer covering of the kidney. Renal capsule, COR. Santosh, Suraj, am I clear? बुझेला ना बुझेलानी. नेक्स्ट तापर जिबा प्रज्ञा, सूरज, अंकिता, तमन्ना, लक्ष्मी. बुझेला तो renal tubule होची PCT DCT loop nephron. For example, I am the nephron and my left hand is Malpighian body which contains glomerulus plus Bowman's capsule and my right hand is renal tubule. I am the nephron and my left hand is Malpighian body or the Malpighian capsule or the renal capsule and my right hand is renal tubule. Means renal tubule ro part hochi PCT DCT loop of Henle and my left hand is Malpighian capsule or the renal capsule or the Malpighian body, right? Chalo. So, but Malpighian tubule is another thing. Malpighian body is not equal to Malpighian tubule. The meaning of Malpighian body is glomerulus plus Bowman's capsule or the part of nephron. But the Malpighian tubule meaning it is the excretory organ for the arthropoda. Next, come to the question number 16. Part of the kidney through which ureter blood vessel nerve center. And this is a sweet question. And you all guys like the sweet, right? Sir, OUT exam ro 100% insider biology रे so संतोष just why are you thinking about the 100%? जदि हमें 90% भी ठीक करछे पाठ that's it सरला clear. And trust me 90% आसी जीवो. Kidney through which, for example, this is the structure of kidney, for example, and suppose this is the ureter, sorry, this is the renal artery, and suppose this is the renal vein which carry the deoxygenated blood from the kidney and the renal artery which transport the oxygenated blood to the
kidney, and this is the, suppose this is the ureter. For example, this is the ureter. And question is, जो जगह रे ये जो पोर्शन ला रहला जो थरे की ब्लड वेसल, renal artery and renal vein and ureter, the notch like structure in which the ureter blood vessel enter, it is called as hilum, right? Yes, perfect. Varsha, Suraj, Tamana, right? And second question, what is the shape of kidney? It is dumbbell shape or the barbell shape or the cake shape or the singeda shape or the bean shape? What is the shape of the kidney? The shape of kidney is, what is the shape of kidney? Yes, it is bean shape. And where is the location of kidney? In reference to the vertebral column. Vertebral column रो position को नेकी आमे basically kidney रो location कौन? T12 L3 or L12 T3 or what is your answer? को yes, T12 L3 last thoracic and third lumbar. Perfect. Okay, T12 L3. Next, what is the length of human kidney? Anyone? I think uh, you all guys are so much intelligent, and already I hope you have an idea about the length and the width and the thickness of kidney. What is the length of kidney? 10 to 12 centimeter. And what is the width of kidney? 5 to 7 centimeter. And what is the thickness of kidney? Yes, 2 to 3 centimeter. Perfect. Chalo, बढ़िया. And basically weight of kidney is 120 to 170 gram. And what is renal column? Yes, गोटे टर्म आम छाड़ी गले. renal tubule तो कहले, PCT DCT loop of Henle and Malpighian tubule तो कहले. But what is the meaning of renal column or the column of a botany? Who can say? What is the meaning of renal column or the column of botany? What is the meaning of renal column and the column of a botany? I mean, janiche, what is the meaning of renal column or the column of botany? For example, this is the structure. For example, this is the structure of human kidney, and this zone is the cortex zone. And already, I mean, janiche, this zone is called as the medulla zone. A portion ta medulla, right? And medulla रे बहुत सारा pyramid like structure था, and these pyramid like structure pyramid बोले ना, just like pyramid like structure. It a pyramid गुड़ा है ही नहीं. Just think it is a pyramid like structure. So these pyramid are called as the renal pyramid. And what is column of botany? The cortex part or cortex part किछटा extend है कि दीटा renal pyramid मझी को जाए. The cortex part extend between the two renal pyramid. दीटा renal pyramid मझी को cortex part किछटा extend हुए, and it is called as renal column, or it is otherwise called as COLOUMN, column of botany, right? Okay. Part of the cortex enter to the medulla. Part of the cortex enter to the gap between the two medullary pyramid, right? Okay. Next, chalo. Okay, come to the 17 number question. Inner to the hilum, the kidney, there is a broad funnel shaped space. It is called as. Obviously, तुम जानिचो. For example, suppose this is the structure of kidney, and suppose this is the ureter, and basically जानिचो these are the renal pyramid. Renal pyramid ru कौन बाहर है? Minor calyx. Then the minor calyx are get together to form the major calyx, and all the major calyx basically open into the funnel shape like structure called as renal pelvis. So answer will be renal pelvis. 17A. Perfect. Joystree, Varsha,
right? Renal pelvis. Next, come to the question number 18. The medullary pyramid project into calyx, renal pelvis, cortex. Means देखो, suppose this is the medullary pyramid. Suppose this is the renal medullary pyramid. Medullary pyramid project into, that is, these are called as the calyx. Next, come to the question number 19. The cortical part that extend between the medullary pyramids. That is the same question. The cortex part which is extend between the two medullary pyramid is called as, that is the column of renal or renal column, or the column of renal, na column of Martini, na column of Bottini, na column of kidney. Obviously column of Bottini. Now come to the question number 20, and it is a diagrammatic based question. So obviously diagram तुम तो किछि तो आइडिया थिबो ना, जमा आइडिया नहीं. Column of botany, Santosh, Lakshmi, Subhrasu, right? Okay. And C part कौन? Cortex zone. This is called as the cortex zone. Cortex zone. This is called as the cortex zone. C is cortex, right? And D होची medulla. Medullary pyramid. देखा तो जाओनी, but for example medullary pyramid. And A is adrenal gland. As you know that adrenal gland or location which is present in the kidney. तो कौन होगा? A टा होची adrenal gland located in the anterior part of the kidney, secrete the catechol with similar glycogen breakdown. ठीक अछि. Pelvis, B टा होची pelvis, broad funnel shapes inner to the hilum, directly connected to the loop of Henle. Directly loop of Henle is connected नुह. Minor calyx to major calyx, then तापर renal pelvis. C होची medulla, ना C होची cortex, D होची cortex, ना D होची medulla. So answer A ही perfect हबो. चलो. Then come to the question number 21. Okay, it is also diagrammatic based question. Yes, perfect Santosh. चलो कौन हबो एटा टिके ठिकाणी भरी. चलो C कौन? Column of botany. Yes, and B is cortex, and D is ureter, and A is pelvis like structure. So कौन हबो? A होची कौन? A calyx, right? Calyx. Okay, A is calyx. ठीक अछि. D ureter. Where is the option? D is ureter. D is ureter, not urethra. D is ureter. C is renal column or the column of botany because cortex part extend easy, and B is the cortex part. So answer will be A. Perfect. बढ़िया पिला तुम माने रे, एक नंबर पिला. Structural and the functional unit of kidney, and answer will be hilum, right? The structural and the functional unit of kidney is hilum. ठीक है. तमन्ना, प्रज्ञा, संतोष, वर्षा, the structural and the functional unit of kidney is hilum, ना? हाँ, जयश्री hilum. भाई रे, सत्तर hilum. That is the nephron. Nephron, not nephridia, nephron. Where is the option nephron? C. Which is the structural and the functional unit of lungs? Who can say? Structural and the functional unit of lungs. Structural and the functional unit of lungs. Who can say? Manosmita. The structural and the functional unit of lungs is, and the options are nephron, nephridia, alveoli, and the hepatic lobule, hepatocyte, alveoli. Perfect. So who can say how many layers are involved for the filtration of a blood in the kidney? But nephron re, basically nephron re, how many layers are involved for the filtration of a blood, or for the filtration of a blood between the glomerulus and the Bowman's capsule? Ketra layer involved? 3 layers. And what are the layers, Subhranshu? What are the layers involved basically for the filtration of blood between the glomerulus and the Bowman's capsule? कौन से layer? One is कौन layer को? Suppose this is the Bowman's capsule, and the core structure is Bowman's capsule, right? And suppose this is the PCT, and as you know that suppose this is the afferent arteriole, and this is the glomerulus, and suppose this is the efferent arteriole. For example, this is efferent arteriole, this is afferent arteriole,
and the filtrating unit is tinta layer. First layer is the layer 1. This is the layer 1, that is the endothelium of blood vessel, BV, blood vessel. Obviously glomerulus is a part of blood vessel. Renal artery blood आनिक आसीबो किडनी रु, renal artery रु afferent arteriole छोटो arteriole आनिक आसीबो. देन टॉप कैपिलरी फॉर्मेशन होबे जहा को हम ग्लोमेरुलस बोली कहउचे, कैपिलरी की ग्लोमेरुलस बोली कहउचे. तो गोटे लेयर होची कार ग्लोमेरुलस रो लेयर. ग्लोमेरुलस होची ब्लड वेसल बा गोटे थिन ब्लड वेसल बा गोटे होची that is the smallest blood vessel. So that is the endothelium of a blood vessel or the glomerulus. This is the layer number 2, that is the epithelium of Bowman's capsule, and there is the tissue is located between the glomerulus and Bowman's capsule. This is called as the basement membrane. And this membrane is made of a tissue or the connective tissue. Basement membrane. Perfect. So these three layers are involved, and endothelium means endothelial cell अछि. Endothelium कहिबा काहे कि हमें, because endothelium the term endothelium is used because it is a single layer of a endothelial cell, and endothelial cell भितर बहुत सारा gap है, and that gap is called as fenestra. So where is fenestra is located? Fenestra is located in the endothelium of blood vessel. Then the basically Bowman's capsule रो एटा को लेयर को जाए, एटा को जाए visceral layer, एटा को जाए parietal layer. तो Bowman's capsule रो visceral layer रे बहुत सारा opening like structure था, छोटा छोटा pore भले था. It is a modified epithelial cell because Bowman's capsule is epithelial cell. तो आपको को जाए podocyte. So the filtration first होची afferent arterial blood आनी के सिवो. Blood रो केबे भी हेले RBC, WBC, platelet, fibrinogen, globulin, albumin filtration हबोनी, केवल प्लाज्मा रो फ्लूइड पार्ट फिनेस्ट्रा देके आसीबो बेसमेंट मेम्ब्रेन को, बेसमेंट मेम्ब्रेन रो पोडोसाइट देकरी Bowman's capsule, right? Gap between the endothelial cell is called as the fenestra. Perfect. Tamana basement membrane, progya endothelium of blood vessel, basement membrane between them and the epithelium of Bowman's capsule. Perfect. So as you know that the three layers पूरा छानिया ପାଇଁ तीनटा layer involve होची. So the due to the involvement of the three layers we can use the term ultrafiltration, right? सर OUT रे डायग्रामेटिक लेवल क्वेश्चन आसीबो कि? डोंट वरी, OUT रे डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन आसीबोनी, बट हमको गोटे पाठ विषय थरोली स्ट्रांग होबा को हेले हमको सब डायग्राम भी मन थिबा दरकार. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके देखो टिके गोटे सेकंड टाइम दियो. जो टाइम हमको दिया जाए, जो वर्षे हमको दिया जाए, घर लोक हमको जो वर्षे देइछंती, आमे कोठी बुलुचे, कोठी जाउचे, कोठी खाउचे, कोठी सोशल मीडिया रे फोटो छाडुचे, कुआडे जाउचे, कोन करचे, से जिंस केही पचारिबेनी. आफ्टर 1 ईयर पर तुम पचारिबे व्हाट इज योर रिजल्ट. केही पचारिबेनी कि तू वर्षे रे कोठी जाइथिलु, काहा सो बुलुथलु, कोठी पिज्जा खाउथलु, कोठी बर्गर खाउथलु, तो कोठी परिश्रम करथलु, कि काहा सो कथा होथलु, केही पचारिबेनी. That is all the relatives and all the people will ask you basically what is your result. OUT ହେଲା और हेलानी हेलानी कोनटा पढुथलु, किछि पढा पढ नै, किछि नै, खाली बसिक फोन चलौथलु. सेही टाइम रो ब्लेम टा हमको लागिवो, जेहेतु हमें गोटे जिम्मेदारी दिया हिची, हमें पाउ न पाउ पछ कथा, परिश्रम तो करिवा ना, स्ट्रगल तो करिवा ना, लागिया ना. स्ट्रगल माने तुम तो की कहू ना माटी कोलिया पे. आम समस्त आम घर लोक कहले आम रागु, मु भी आम घर लोक कहले भी रागुची, एटा जनरल कथा. किंतु रियलिस्टिक कथा जतरा हम कहिबा, एटा होची माने यूनिवर्सल ट्रुथ कि जदि आम एई टाइम रे स्ट्रगल न करिया बा हमकु जो टाइम दिया हिची से टाइम स्ट्रगल न करिया, से टाइम तले पास कर जीवो आ किछि भी नथिवो. लाइफ सारा केते पड़िछि बुलो. पिला घर लोक जो भरोसा तुमको छड़ा होची कि भुवनेश्वर छड़ा होची, केबे हेले मिसगाइड होनी. माने कि आज बुली दवा मार्केट जे जीवा, ए गोटे निसार माने केतोळे केतोळे एटा एडिक्टेड हि जीवो. जदि हम डेली बेसिस रे हम फोन चलोचे कि डेली बेसिस रे मार्केट जाउचे कि डेली बेसिस रे हम चारडे बुलुचे, ए करछि को गोटे टाइम से हम जानि परिया ना हम एडिक्टेड हि जेतो से जिंस. हम संध्या बेले नगल हम बोर लागिवो, संध्या बेले हम फोन न चले हम भल लागिवोनी. तो केबे हेले को बैड जिंस को एडिक्टेड रे तुम कन्वर्ट करो. So you have to focus on your study first.
एंड किछि भी डिफिकल्ट नहीं. we all the students are with you. तो किछि प्रॉब्लम नहीं तुमको. तो दैट इज मु मोर जेतिकी 100% दवा कथा जेतिकी दैट इज इंस्टेंट प्लेजर लीड्स टू पॉइजन. मु तुमको जेतिकी मो तरफ मु तुमको जेतिकी बुझिया ପାଇଁ ट्राई करछि तमे भी जदी सेही रिसेप्टिव माइंड रहिबो. ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज you should try to present in the receptive mind, not in the opposite mind. जदि opposite mind रहिबो हमकु जदि किछि गोटे कि भलो भी कहउथिबो हमकु ताको भल लागिबोनी. हमकु रिसेप्टिव माइंड रे सुनियार अछि कथा को. एंड जो अपॉर्चुनिटी तुमको छड़ा है कि विद्यासागर क्लासेस रे तुम जॉइन करो तुमको जो पैसा देकी तुम पेमेंट देकी आसीछ जदि किछि जिंस न सिखिबो हम डेली लाइफ रे किछि जिंस दे हम न जानि पारुचे ताले हम किछि तो नाही पढ़ी के लाभ किछि नाही. जदि हम किडनी विषय पढ़ुचे एंड हमको जना ना तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ किडनी सो पाठर किसी ना. एंड जदि गोटे छोट पिला पचार कि ब्रदर और द सिस्टर कैन यू एक्सप्लेन व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स और व्हाट आर द मटेरियल्स और बेसिकली को जिनस गुड़ा किडनी रे लोकेटेड अछि एंड किडनी रो डायग्राम कोन. तो जदि हमको सिंपली जिनस नथिबो तो हम गोटे पाठ पढ़िया तो किछि माने ही नाही. आमे कहूने कि हमको पीएचडी लेवल दरकार आमे जनरल जिनस दरकार कोउट ब्लड फिल्ट्रेट होची कोउठी जाउची केमती फिल्ट्रेट होची दैट्स इट. डेजर्ट एरिया रे जो माने रहउछन से माने काहे कि कॉन्सेंट्रेटेड इन्फॉर्मेशन करछन जो माने लॉट्स ऑफ वाटर ईट कर ड्रिंक करछन कि व्हाई दे आर रिलीजिंग द डाइल्यूटेड यूरिन. छोट छोट कांसेप्ट जानिले हे जीवो. चलो पहले हाउ थे केते भाषण दउछन. नेक्स्ट व्हिच अमंग द फॉलोइंग किडनी स्ट्रक्चर फॉर्म ए हाईली कॉइल्ड नेटवर्क ऑफ ट्यूबुल पीसीटी डीसीटी लूप ऑफ हेनली एंड कलेक्टिंग डक्ट. चलो कौन हम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग किडनी आम कौन एत दूर को पलि आसलुनी. ओके चलो स्ट्रक्चरल फंक्शनल गला इन ह्यूमन किडनी 23 नंबर आसो 23 नंबर कम टू द क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन को आसो. चलो 23 that is the human kidney has about 1 million of nephron and 2 million of nephron not 10 billion. Obviously we are millionaire and I'm happy about darkar that is we are the millionaire means each kidney has 1 million nephron each kidney re. Where is the location of our kidney is located in the ventral side or the dorsal side. Who can say kidney is located basically in the dorsal side or the back side or the ventral side or the front side. Ventral means that is the front side and the dorsal means back side. Where is the kidney is located, dorsal or the ventral? Obviously it is located in the dorsal side and yes each kidney has 1 million of nephron. Perfect. Come to question number 24. Each nephron has two parts. गोटे नेफ्रॉन दीटा पार्ट अछि ग्लोमेरुलस बायमेंस कैप्सूल और द बायमेंस कैप्सूल एंड पीसीटी ना ग्लोमेरुलस एंड द रेनल ट्यूबुल कोन हबो. चलो 24 परफेक्ट. कौन कौन ओवरऑल पार्ट होची कौन ग्लोमेरुलस एंड रेनल ट्यूबुल. परफेक्ट. चलो then 24 come to the question number 25. The tuft of capillaries which form the glomerulus and those which carry the blood away from the glomerulus respectively are tuft of capillaries which form the glomerulus and those which carry the blood away from the glomerulus. Obviously that is blood आने के afferent arteriole and blood को return नहीं के efferent arteriole. and question कहाँ विषय पचार efferent arteriole. so answer कौन हो tuft of capillaries यूज किए glomerulus and those who carry blood out the glomerulus are respectively. That is the efferent arteriole and the hepatic vein. Perfect. Afferent renal artery kidney भितर को blood आनिबो filtration पाई for example. then that is filtration हेई गला renal artery बाहरी afferent arteriole दबो बायमेंस कैप्सूल को glomerulus efferent arteriole रो again that is the हबो. चलो C efferent arteriole afferent arteriole the top capillaries which form the glomerulus and those yes sorry मोटा renal vein भाबिछ not top of capillaries which form the glomerulus yes afferent arteriole and those which carry the blood that is yes afferent and efferent. Next question number 26. What is the function of Byman's capsule and the glomerulus and Byman's capsule function कौन filtration of blood
reabsorption of ions from the blood, reabsorption. देखो, the function of glomerulus and the Bowman's capsule is not reabsorption. The main function of a glomerulus and Bowman's capsule is for the filtration. The function of reabsorption and the secretion, these are the part of PCT, DCT, loop of Henle and the collecting duct. So answer will be filtration. Perfect. Malpighian body, already I have told about to Malpighian body and the Malpighian capsule and the renal capsule. Alternative name of Bowman's capsule? No. PCT, DCT collecting duct? No. Bowman's capsule and glomerulus? Na functional unit of kidney. कौन हबो? That is Bowman's capsule and the glomerulus. Glomerulus along with the Bowman's capsule. Okay. छाड़ो diagram छाड़ो. Next चलो 29. बहुत time जीवो. Which among the following kidney structure form a highly coiled network of a tubule? किए होची बेसिकली हाईली कॉइल्ड नेटवर्क ऑफ ट्यूबुल फॉर्मेशन करे को कोन आंसर एंड यस परफेक्ट रेडी बढ़िया अछि फॉर्म ए हाईली कॉइल्ड proximal convoluted tube and the distal convoluted tube, right? Suppose okay, so suppose this is the structure of a PCT. Okay, तो हाईली कन्वोल्यूटेड होची कि PCT हो DCT. परफेक्ट. अच्छा मते को बेसिकली PCT DCT loop of Henle, which one is plays a very important role or very vital role for the reabsorption of a maximum amount of electrolyte and water and 100% glucose, in which part of the nephron 100% glucose, 70 to 80% electrolyte and maximum amount of water will absorb? Yes, the right answer is PCT. Why PCT plays a very important role for the reabsorption or absorption? कौन पे PCT important role play करे? Because as you know that PCT, it is lined by simple cuboidal broad sporol like epithelial cell. You have to remember, this is the previous year question of NEET. Simple cuboidal broad sporol like epithelial, broad sporol like ब्रश लाइक अपीयरेंस अच्छी. सो सरफेस एरिया बढ़ी जीवो जहाँ फल कि 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट और मैक्सिमम इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब हो, 100% ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो, 70% भाया वाटर एब्जॉर्ब हो, राइट? व्हाट इज द ऑस्मोलारिटी ऑफ अ ब्लड? हु कैन से व्हाट इज द ऑस्मोलारिटी ऑफ अ ब्लड? और ब्लड ऑस्मोलारिटी माने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन. व्हाट इज द ऑस्मोलारिटी ऑफ ब्लड? 300, 400, 500, 600. हु कैन से व्हाट इज द ऑस्मोलारिटी ऑफ ब्लड? संतोष, तिलोत्तमा, प्रज्ञा, 300 milliosmol per liter, right? So PCT is isotonic to plasma or the hypertonic or the hypotonic? Osmolarity same. PCT रे भी osmolarity समान है ना, काहेकि same amount of water, same amount of electrolyte release होची, 70% water, 70% electrolyte. So isotonic भले रहइबो, प्लाज्मा रे osmolarity सो समान रहइबो. Okay. Then descending loop of Henle is permeable to water or impermeable to water? Who can say? And this question for Pragya, Lakshmi and Suraj. DCT, descending loop, sorry, I am really sorry, not DCT. Descending loop of Henle, it is permeable to water or permeable to electrolyte? Descending loop of Henle, it is permeable to water or permeable to electrolyte? Permeable to water. And ascending loop of Henle is permeable to electrolyte, right? Perfect. Then second question, for the concentrated urine formation पे किए किए important role play करे? Only NaCl, only urea, both NaCl and urea, ना NaCl, urea, RBC को? For the concentrated urine, kidney has to increase the hyperosmolarity of a medullary interstitium. So to increase the hyperosmolarity of a medullary interstitium or medullary interstitium रे osmolarity को बढ़ाया पाई को दीटा substance important role play करे?
कहीं ना मेडुलारी इंटरस्टिशियम रो जदी ऑस्मोलैरिटी बढ़िबो सॉल्यूट बढ़िबो सॉल्वेंट कमिबो डिसेंडिंग लूप रु वाटरटा रीअब्सॉर्ब हो सो both NaCl and urea perfect okay come to the question number 30 the structure from which the collecting duct receive the filtrate collecting duct receive the filtrate the structure into which pours the filtrate respectively basically को part रू yes को part रू collecting duct obviously this is the Bowman's capsule connected. This is the PCT this is the loop of Henle and this is the DCT this is कौन DCT PCT descending loop of Henle ascending loop of Henle question पचाला collecting duct काहाटर receive करछि obviously DCT ठारू NAC and urea Mohes NaCl and urea perfect and ये क्वेश्चन आंसर दियो कौन हबो yes that is duct collecting duct receive करछे काहाटारू बढ़िया क्वेश्चन अछि yes बुझाला तो डिसिट रु एंड काहा को दउची कलेक्टिंग डक्ट यूरिनरी ब्लैडर को डायरेक्ट दे दोचे नाही सब कलेक्टिंग डक्ट आगो दिस इज द मेडुलरी पिरामिड सपोज एटा होची बामेंस कैप्सूल कलेक्टिंग डक्ट देबे कलेक्टिंग डक्ट रु आगो माइनर कैलिक्स रु मेजर कैलिक्स रु रिनल पेल्विस तापर यूरेटर तापर यूरिनरी ब्लैडर सो जेहेतु एटी माइनर कैलिक्स नाही मेजर कैलिक्स नाही सो डीसीटी रु कलेक्टिंग डक्ट को जीवो डीसीटी ही हबो फास्ट कथा देन काहा को दउची पोर करछि काहा को ऑब्वियसली जेहेतु माइनर कैलिक्स मेजर कैलिक्स नाही रेनल पेल्विस हबो राइट सो आंसर विल बी बी परफेक्ट बी लक्ष्मी राइट हला एया ना जेतोळे किडनी को हमरो बेसिकली लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड जेतोळे ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करिवो हार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करिवो आउटा देखि बॉडी रो डिफरेंट पार्ट को जीवो आउटारू रेनाल आर्टरी बाहरिबो जे कि किडनी भितर को ब्लड नै के आसीबो केते ब्लड फिल्ट्रेशन पय जीवो हाउ मच परसेंटेज ऑफ ब्लड इज गोइंग टू द किडनी पर मिनिट फॉर द फिल्ट्रेशन दैट इज 1/5 ऑफ द 20% blood 20% blood or the 1/5 of the blood filtered by the heart that is the 1100 ରୁ 1200 तो renal artery देखिर किडनी भितर को आसीबो देन renal artery afferent arteriole then afferent arteriole glomerulus रो Bowman's capsule filtrate गला परे देन efferent arteriole देखिर जहा चला बट फिल्ट्रेशन हे गरा परे collecting duct कहा को दबो minor calyx major calyx renal pelvis रो ureter urinary bladder रो urethra this is the lining चलो next the majority nephron in which loop of Henle found is too short आम मन केस रे in the human beings that is 85% nephron is cortical nephron so you have to remember 85% nephron is cortical nephron but only 15% nephron is juxtamedullary nephron right GMN not Jamuna juxtamedullary nephron 15% and cortical nephron रे already you जानि तमन जानिचो that is the loop of Henle is very small loop of Henle is small first thing then the second thing is vasa recta is absent yes right perfect here is loop of Henle is large vasa recta is present so answer is the cortical nephron majority of nephron in which loop of Henle is found short and extend very little into the medulla right 32 which of the following is a part of medullary pyramid ro part कोटा PCT DCT Malpighian tubule suppose this is the medullary pyramid right and suppose this is the Bowman's capsule PCT loop of Henle DCT collecting duct Bowman's capsule PCT loop of Henle DCT collecting duct Bowman's capsule PCT loop of Henle DCT collecting duct so कोटा part of medullary pyramid रे कोटा loop of Henle Malpighian capsule तो Malpighian body एठी रहिला renal artery blood आणला then renal artery afferent arteriole glomerulus इतो एठी होला Malpighian capsule नो discharge completed tube
एटा DCT ऊपर रहला, PCT भी cortex रे रहला, PCT DCT नो, that is loop of Henle. Come to the question number 33. In juxtamedullary nephron, vasa recta is prominent, loop of Henle is long, loop of Henle is deep into the medulla. Now all of the above. Juxtamedullary nephron or the nephron, basically the loop of Henle is small. कौन हबो? Yes, perfect. In juxtamedullary nephron, vasa recta is prominent, a loop of Henle is long. Juxtamedullary nephron, cortical nephron, juxtamedullary nephron. Loop of Henle is long, loop of Henle deep in the medulla, all of the above. Come to the question number 34. The peritubular capillaries around the renal tubule emerge from. Peritubular capillaries emerge from code efferent arteriole. Means suppose this is the Bowman's capsule, this is the afferent arteriole, glomerulus, efferent arteriole. Efferent arteriole आहुरी छोटो 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 एडी स्मॉल आर्टरी जाए जहाँ हम पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कोए जे कि रेनाल ट्यूबुल चारिपटे बा दैट इज लूप ऑफ हेनली डीसीटी या चारिपटे कैपिलरी गुडा फॉर्मेशन करे. दिस इज कॉल्ड एज पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज. efferent arteriole ru emerge हुए, very very important. Peritubular capillaries are emerged from the efferent arteriole. So 34C. Yes. बोर लागुन तो आमे जहाँ पीछे क्वेश्चन डिस्कशन करछे आई डोंट थिंक कि बोर लागुथियो बोली. बोर भी लागुथाई पारे. तिलोतमा, सूरज, वर्षा, दास दास, सूरज, आर यू फीलिंग बोर और नॉट? ओके. एते कम पिला नेक्स्ट क्लास रू जदी अधिका पिला न आसबे, अप्रोक्सीमेटली जदी 40 प्लस पिला न आसबे काहे क्लास कर किसी लाभ नहीं. ओनली 17 जन पिला मात्र. नेक्स्ट क्लास रू शुभ्रांशु तमे तम सांग को डाकिबो, सुजीत तमे तम सांग को, वर्षा तम सांग को, प्रज्ञा एंड मिताली आई थिंक नहीं, देन दास दास, अंकिता. चलो ओके. The U-shape minute vesicle that runs parallel to the loop of Henle. U-shape minute vesicle that runs parallel to the loop of Henle, it is called as vasa recta. Perfect. तुम जानी छो? Okay. 37 number of vasa recta is highly absent or reduced. 36. 40 number पर्यंत करिया, then next class रे करिया हला. टोटल आज क्लास रे बा ए क्लास रे हमें 40 क्वेश्चन कवर अप करिया. नेक्स्ट क्लास रे करिया भाषा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड. कोउतरे भाषा रेक्टा टा एब्सेंट थाए बा हाईली रिड्यूस्ड थाए? मेडुलरी नेफ्रॉन ना कॉर्टिकल नेफ्रॉन ना जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन ना बोथ ए एंड बी. भाषा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड, ऑब्वियसली कॉर्टिकल नेफ्रॉन. परफेक्ट. बी. कम टू द क्वेश्चन नंबर 36. आइडेंटिफाई ए एंड डी. द डायग्राम रे ए डी भीतर देखो एटा होची कोन afferent arteriole. Obviously the diameter of afferent arteriole is larger than the efferent arteriole, so that a pressure is arise and that pressure is called as glomerular hydrostatic pressure. जानिछ obviously due to the different diameter of both afferent arteriole and the efferent arteriole, the diameter of afferent arteriole is larger and the diameter of efferent arteriole is smaller. So due to the change in diameter between the afferent and the efferent, there is a pressure is generated and that pressure is called as glomerular hydrostatic pressure, or the pressure generated by the glomerulus is called as glomerular hydrostatic pressure. So A is afferent arteriole, B is efferent arteriole, and C is Bowman's capsule, and D is PCT, right? Afferent arteriole co-option. C is Bowman's capsule, D is कोटा A afferent arteriole, B होची efferent arteriole, C Bowman's capsule, D proximal is perfect. A. Come to the question number 38. Arrange the following part of the nephron in a sequential manner and select the correct option accordingly. Sequential manner कोन? glomerulus, ascending loop of Henle, descending loop of Henle, PCT, collecting duct, DCT. आगो कोन? glomerulus, then होची Bowman's capsule रो PCT, then होची descending loop of Henle, PCT, then descending loop of Henle, then ascending loop of Henle, then DCT, then collecting duct. So answer कौन होबो?
I, yes. Then triple I think. B option. IV. Yes, yes. PCT is perfect. Chalo. B. Next. The correct order process occur in the urine formation. What is the perfect order for the urine formation? Urine formation by perfect order kono? 39 and last question is 40. Correct order process that occur in the urine formation. Urine formation by correct order kono? Glomerular filtration, tubular secretion, reabsorption. Now glomerular filtration, reabsorption and secretion. That is the perfect procedure. Yes, that is the glomerular filtration and the reabsorption and the secretion. This is the perfect sequence for the formation of urine. And the term, for example, if I will use the term urine, in which part of the nephron I should use the term urine? In which part of the nephron that I should use the term urine? PCT or a DCT or a loop of Henle or collecting duct? Sujit, Tilotama, Jayashree, Pragya, Nikita, in which part of the nephron that I should use the term urine? Collecting duct. Yes, because in the PCT I will use the term filtrate. In the descending and ascending and DCT also I will use the term that is filtrate. But most perfect answer is collecting duct. In the collecting duct I should use the term urine instead of filtrate, right? Okay, next, glomerular filtration, then the reabsorption, and the maximum reabsorption takes place at the PCT uh, due to the broad like appearance. Perfect. Then last question 40. Amount of a blood that is filtered by the kidney per minute. How much blood is filtered by the kidney per minute? Per minute रे केते blood filtered होची? केते ब्लड फिल्ट्रेट होची? नॉट क्वेश्चन इटी पचारनी कि केते फिल्ट्रेट फॉर्म होची. क्वेश्चन इज स्ट्रिक्टली अबाउट द हाउ मच ब्लड इज फिल्ट्रेट, and obviously that is the 5 liter or the 5000 milliliter blood is pumped out by the heart in 1 minute, right? And 1/5 or that is the 20% blood is coming towards the kidney for the filtration, and 1/5 or the 20% is 11 11002 11200. This is the perfect answer. And if the examiner will ask you how much filtrate is formed from the 1100 to 1200 milliliter of blood, kete filtrate formation hai? That is 125 milliliter per minute. And how much filtrate is formed in a day? That is 180 liter. Perfect. And 99% of filtrate are absorbed in the nephron. 70 to 80% are absorbed in the PCT, 15% are absorbed in the descending loop of Henle, and 5% are absorbed in the DCT. So only 1%, that is the 1 to 1.5 liter urine is passed through uh, through our P. Ready? Then last 41. Number of layers involved in the filtration of blood. Kette layer filtration of blood by involved? 2, 3, 1, 4. Obviously the right answer is 3. That is the endothelium of glomerulus, in which the endothelium is lying by the endothelial cell, and the gap between the endothelial cell is fenestra, and the basement membrane which is present between the glomerulus and the Bowman's capsule. Then the podocyte cells are located in the Bowman's capsule. So 3 layers are directly involved in the filtration, right? (41). Then 42. Choose the incorrect statement layers. Okay. चलो करूँ तो करूँ 42, 43, 44. इति end करियो ए पेस्ट आउ. So come to the question number 42. Choose the incorrect option on the layers present between the glomerulus and the Bowman's capsule. Incorrect option for the layers present between the glomerulus and Bowman's capsule. Epithelial of the layer of glomerulus, basement membrane is present between the endothelium and the epithelium. Endothelium is the layer of a Bowman's capsule. Now both A and C. Epithelium is a layer of glomerulus blood vessel. Endothelium is the layer of a glomerulus blood vessel.
Endothelium is the layer of biomass? No. Epithelium is the layer of biomass capsule. Biomass capsule ro epithelial layer, glomerulus ro endothelium. Dita ko sentence bhul. Basement membrane is present between the endothelium and the epithelium. Means we can say that outer side of basement membrane is endothelium of a glomerulus. One side is endothelium of a glomerulus and another side is epithelium of biomass capsule. Perfect. चलो एंडोथेलियम लेयर टा कोन बायोमेंस कैप्सूल रो एपिथेलियल लेयर होची बायोमेंस कैप्सूल रो एंडोथेलियम टा होची ब्लड वेसल रो एंड इट इज एपिथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलस ग्लोमेरुलस रो एंडोथेलियम बायोमेंस कैप्सूल रो एपिथेलियम सो ए दिटा केमति ठीक हैला एबा देसी एंडोथेलियम लेयर ऑफ बायोमेंस कैप्सूल एंडोथेलियल लेयर बुझियोछ ना बुझिबानो incorrect पचारछि ओ माय गॉड सॉरी oh question is about incorrect and the right answer will be D perfect eta incorrect पचारछि सॉरी मु भाबिली correct so answer will be D because incorrect perfect eta होछि ए आंसर माने ठीक स्टेटमेंट एटा किंतु क्वेश्चन पचारछि incorrect then question number 43 podocytes are endothelium of glomerulus endothelium cells of biomass capsule epithelial cells of biomass capsule obviously easy question चलो कौन हबो Question number 43. Podocytes are endothelial cell of a glomerulus, endothelial cells of biomass capsule, epithelial cells of biomass capsule. कौन हो? Endothelium podocyte कोड था epithelial cells of biomass capsule. 43 C perfect. 44 ultrafiltrate formed by the glomerulus contain all the constituent of the blood plasma except कागु ultrafiltrate रे ultrafiltrate formed by the glomerulus contain constituent of the blood plasma except mineral thibo urea thibo except protein right चलो 44 गला then 45 is for your homework and मु देखिबी there is 21 students are watching and मु देखिबी जेमती अंकिता इंद्रजीत जयश्री सूरज जेमती कि तमे होमवर्क रहला तम पई 45 juxtaglomerular apparatus 46 47 48 तो 45 46 47 48 49 and 50 एती क्वेश्चन टोटल पर तमे होमवर्क रहला तमरो एंड होमवर्क मान कोन दैट इज तमे कमेंट रे जणेबो दैट इज केते नंबर 45 to 50 राइट ओके सो क्लास तुम केमिति लागिला यू कैन कमेंट सो दैट हमें नेक्स्ट क्लास को कंटिन्यू करिबा या स्टॉप करिबा डिपेंड करिवो कि ऑडियंस को ऊपर चलो आई एम न्यू हियर yes signing medico saina yes welcome to Bidyasagar Classes YouTube channel and also welcome to our zoology video okay ठीक अछि तो you can comment your कोन तमर एप्रिसिएशन अछि एंड कोन तमर इंप्रूवमेंट दरकार अछि एंड तमे दैट इज सर नेक्स्ट क्लास लेबे हो तमे दैट इज तम क्लास को केमिति लागिला तमे सेटा कमेंट रे जणा एंड आल्सो तमरो जो होमवर्क रहला सेटा भी कमेंट रे करो चलो रहिले एठी काहे कि तमे लाइव रे जा को से ऑलरेडी भानिस हे जिवो तो तमर कमेंट ही रहइबो ठीक अछि एंड हैव ए नाइस नाइट भल से पढ़ा पढ़ी करो अगेन नेक्स्ट क्लास रे एई चैप्टर रो पूरा फिनिशिंग क्वेश्चन करे अप टू डायलिसिस पर्यंत क्वेश्चन कला पर ही चैप्टर सब क्वेश्चन कवर अप होबो काने ये गोटे पेज क्वेश्चन गला नेक्स्ट पेज रे आर टोटल सब कंप्लीट क्वेश्चन होबो देन नेक्स्ट चैप्टर जिया लोकोमोशन एंड मूवमेंट चलो एंड लोकोमोशन मूवमेंट रो दीटा सेशन करिया गोटे सेशन रे दैट इज फर्स्ट किछरा क्वेश्चन डिस्कवर हे जो सेकंड पार्ट रे होबो चलो मेन टॉपिक कवर अप कर देला पर आ जा टॉपिक रहला ताको उडे गिरे नबा यस चलो जय जगन्नाथ ऑल ऑफ यू यस चलो शुभ्रांशु प्रज्ञा जयश्री सुजीत वर्षा सूरज चलो साइनिंग मेडिको साइना सो हैव ए नाइस नाइट अगेन गुड बाय